you turn to the book of 1 Samuel chapter 13. और पहला सामुएल उसकी 13वां अध्याय, This for the sake of young brothers and sisters. पहला सामुएल अध्याय 13। बस एक मिनट। Yes, पहला सामुएल अध्याय 13। Yeah, we will read verses 8, 19. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offering. And he offered the burnt offering. And it came to pass that as soon as he had made an end of the offering, the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might salute him. We won't read. Please follow in your own Bibles to save some time. पहला सामुएल 13वां अध्याय 8वां पद से अपने अपने बाइबल में पढ़िए। Yes, and पहला सामुएल 13वां अध्याय 8वां पद से। Yes, and it came to pass, I'm reading verse 10, and it came to pass as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might salute him. And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. 12वां पद का आखिरी हिस्सा, शाऊल राजा ने सामुएल दर्शी से क्या कहता है? सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी परमेश्वर प्रभु यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाया। And Samuel said unto Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. And for now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. So in this example we see how Saul sinned against the Lord through presumption and proud disobedience. शाऊल राजा ने अपने स्वयं की कल्पना, अपने जीवन की घमंड से जो प्रभु का परमेश्वर का विरुद्ध पाप किया, इन बातों को इन हवाला में, इस उल्लेख में हमने देखा। Yes. Now we see that this is the same sin that Uzziah committed in his own life. यही पाप उज्जिया राजा भी अपने जीवन काल में किया। When we turn to the book of 2 Chronicles, और इतिहास का दूसरा पुस्तक and chapter 26, और उसका 26वां अध्याय, इतिहास का दूसरा पुस्तक उसकी 26वां 2 Chronicles 26 and verse 5, please. इतिहास की दूसरी पुस्तक 26वां अध्याय 5वां पद से। Not pad se, we will just read verse 5. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. 5वां पद 26वां अध्याय उसका दूसरी इतिहास का 26वां पद 5वां पद। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखा था, वह
उज्जिया राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में, अर्थात उज्जिया राजा यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उज्जिया राजा को भाग्यवान किए रहा. Yes, so we read here, as long as he sought the Lord, God made him to prosper. इधर उज्जिया का राजा के विषय पर हम देखते हैं, जब तक उज्जिया राजा अपने जीवन में यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उज्जिया राजा को भाग्यवान किए रहा. We will turn again to verse 16 to save some time. और उसके बाद में 16वां पद से उसी अध्याय का 16वीं आयत से हम आगे देखें. Please read in your own Bibles. अपने अपने बाइबल में देखिए. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. And Uzziah the priest went in after him, and with him 80 priests of the Lord that were valiant men. And they withstood Uzziah the king, and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed. Neither shall it be for thine honor from the Lord God. Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense. While he was wroth with the priests, the leprosy even rose up in his forehead before the priests in the house of the Lord, from beside the incense altar. Verse 21. Verse 20. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. Verse 21. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in several houses, being a leper. For he was cut off from the house of the Lord. And Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. So here we read what happened with this good man, a king who was used of God to restore the glory of Judah and Jerusalem. जो यरूशलेम और यहूदा की महिमा को सुधार करने में परमेश्वर ने खड़ा किया, अभिषेक किया, उज्जिया राजा ने क्या किया कहकर इसका वृत्तांत हमने इस उल्लेख में हमने देखा. The sin of Uzziah was, उज्जिया की पाप यही था, that his unclean flesh began to reach out and touch that which is of the most holy. उज्जिया राजा क्या पाप किया? उसका अशुद्ध शारीरिकता जो है परम पवित्र वस्तु को स्पर्श किया. He mishandled in presumption the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा को गलत रूप से स्पर्श किया या व्यवहार किया. He mishandled the glory of God in presumption. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को कल्पना से गलत तरीका से इस्तेमाल किया. He transgressed in his presumptuous approach to God. और वो Listen carefully, saints of God. अपने स्वयं के कल्पना के आधार पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश किया. He transgressed in his presumptuous approach to God. वो परमेश्वर के विरुद्ध यही उन्होंने अपराध किया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में
गलत कल्पना से, doing things his way वो बातें अपने तरीका से वो काम किया, instead of God's way. परमेश्वर को नियम का विपरीत अपने सोच विचार के अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार वो कुछ काम किया। He thought he knew better. वो इसलिए उसके मन के अंदर अभिमान आ गया, मैं कुछ अच्छा जानता हूं, And he chose to do things his own way. और अपने तरीका से वो करने के लिए अपने जीवन में उजिया राजा ने चुन लिया। Now, saints of God, this is what we ourselves can also indulge in our own lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में ध्यान से सुनिए, जिसके कान वो ध्यान से सुनिए, हमारे आत्मिक जीवन में भी और इसी प्रकार काम में हम लग जाएंगे। You know, many times we come into a place where we begin to mishandle the glory of God और through presumption. और हमारे जीवन में अपने स्वयं की कल्पना से हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को गलत रूप से इस्तेमाल कर We transgress in presumptuous approach to God. और हमने हमारे काल्पनिक तरीका से परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। Yes, many times we try to do things our way than God's way in our lives. परमेश्वर की तरीका के बदले में हमारा जो तरीका अच्छा है, उत्तम है क्या समझकर अपने तरीका से कुछ काम कर बैठता है। We feel we know better. और क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं, हम उससे भी अच्छा जानते We हैं, begin to do things in our own way. और इस कारण हम अपने सोच विचार के अनुसार अपने मार्ग में कुछ, अपने सोच विचार के अनुसार कुछ काम Now करते we हैं। need to be very, very careful in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना। The realm into which God has brought us, और जिस वातावरण में परमेश्वर में ले आया, the place where we are in the mercies of God, परमेश्वर की करुणा से जिस क्षेत्र में मैं और आप हम अभी है, may we be ever sensitive and know that we cannot bring in the unclean flesh into the things of God. और निश्चय अपने जीवन में निश्चय करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा से ऐसी स्थान पर आत्मिक वातावरण ले आया है। इस वातावरण में हम प्रवेश करते, इधर रहते हुए और अपना अशुद्ध शारीरिक विचार से, शारीरिक कल्पना से उत्पन्न होने वाले, स्वयं का विचार से उत्पन्न करने वाले उस तरीका से परमेश्वर से, Let there be no presumptuous approach toward God in our lives. Let there be no presumptuous approach. और हमारे काल्पनिक रूप से परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंचे, But let us know, wait and seek the way of the Lord in our lives. हम परंतु अपना जीवन में परमेश्वर की मार्ग के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम इंतजार करें, उसी की और हमारे दृष्टि लगे रहे। You know, here in the mercies of God, the priest here did confront Uzziah and said, "This is not right what you are doing." हम इधर देखते हैं, परमेश्वर की ओर से चुने हुए अभिषेक किए हुए याजकों ने उजिया राजा के सामने आकर कहा, जो आप ये काम कर रहे हैं ये परमेश्वर का नियम का विरुद्ध है, ऐसा मत करो, कहकर उसको पहले चेतावनी But he दिया। was not willing for correction in his life. परंतु वो उजिया राजा और एक सुधार की बात उसको बताया तो उसको अधीन होने के लिए उसकी इच्छुक नहीं था। He was unwilling for that correction in his life. क्योंकि उस सुधार की बातों को वो अनिच्छुक था। Many times we go on doing things in presumption. और कई बार हमने अपने कल्पना से कुछ कार्य करते रहते हैं। Yes, and proud disobedience to what the Lord has made clear to us. और वो In proud disobedience to what God has shown to us. और घमंड आज्ञाकारीहीनता से जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, ऐसा कुछ काम कर बैठते हैं। Oh, we need to be very sensitive, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम and careful in our lives in these days. हमारे इस मसीह आत्मिक जीवन में बहुत अत्यधिक सावधान रहना है। You know, there are many things we can do in our lives. और कई काम हमारे जीवन में हम कर सकते हैं, आत्मिक काम हम कर सकते हैं। We are living in the New Testament days. क्योंकि हम नया नियम के
समय पर हम युग में हम रहते We हैं. all are priests unto God. We all are priests unto God. हम सबके सब परमेश्वर के सन्मुख में याजक की समाज है. You know, we all are equal in Christ. हम सबके सब मसीह में एक समान है. Yes, praise God for our calling in Christ Jesus. और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर की बुलाहट की हम प्रभु को स्तुति करते And हैं. yet, saints of God, God has got His government, God has His grace operating in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो भी ध्यान से सुनना, तो भी परमेश्वर की जो शासन जो है, परमेश्वर का अनुग्रह की शासन जो है, No, there is the grace of God and the government of God in operation in our lives. हमारे जीवन में तो भी परमेश्वर का अनुग्रह की शासन, परमेश्वर की वो शासन, वो परमेश्वर का अनुग्रह से हमारे जीवन में अभी भी है. And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. And restore unto me the joy